रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ॐ राम रामाय नमः। श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये। Namaskar, my brothers and sisters, elders. I welcome you to Srimad Välmiki-Rāmāyaṇa original Sri Rama Katha. First of all, we pray to God Rama. The glory of Sri Ram Bhagwan is narrated in our Srimad Välmiki-Rāmāyaṇa. जो राम भगवान की कहानी है, उनकी जो भव्यता है, तो पूरे ब्रह्मांड के अधिपति देवता हैं, उनकी कहानी जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, दैट इज़ अ बेस्ट सुपीरियर philosophy in the world, and this is the world famous Välmiki-Rāmāyaṇa that is published by the Gita Press, Gorakhpur, and this is the part 1 of this Ramayana. We pray to the God Brahma ji, Vishnu ji, Shankar ji, Kartikeyi, श्री राम भगवान, सीता माता, सबकी जय हो। श्री राम भगवान की जय हो। श्री राम भगवान की जय हो। श्री राम भगवान की जय हो। We will try. My name is Ashish Kumar and I am a chemistry teacher. I want to some participation for our society, for our new generation become English medium generation. So they require English Ramayana. And at the same time, I will convert their sloka in a Hindi and Gujarati. So our children, our Sri Ramdas Maharaj Santram Mandir says that every children must read English as well as the word in the same Gujarati and Hindi. कि जो शब्द इंग्लिश में पढ़े वही उसको गुजराती में भी सिखाओ, हिंदी में भी सिखाओ, यानी उसका नॉलेज अधूरा पूरा इंग्लिश नहीं, हिंदी में भी सिखाओ, इंग्लिश में भी सिखाओ. Before I will start this Ramayana today, this is the first episode, I will say one story. One time, one devotee going to the Guru to take उसको बोलते हैं उनसे दीक्षा लेने के लिए, टू टेक दीक्षा यानी टू बिकम अ सेंट. Then Guru say him that you will go with this flag, उनको एक ध्वजा दिलाई हाथ में, to around the all famous, all religious places. When this flag, this is the white flag, white dhanja, that convert into red, then you got my मेरा आपको शिष्यत्व मिलेगा, मैं आपका गुरु बनूंगा, I will become your guru. Then this devotee going to every holy and devotee places, but there is no conversion of flag white into red. But one day when he is in one holy place of Ayodhya or any other place, I don't know, then at the night time one girl going out somewhere, the four
stupid people harass that girl. Then this devotee become angry, and the flag and the rod, which is flag is in there, he is fight with that rod and flag, and that poor all stupid people run away and उनको घायल कर दिया, लहूलुहान कर दिया, and bloody that blood convert that flag into the red. And then Guru said that you are become my shishsir. This is the real dharma. What is dharma? Real dharma is a Ramayana narrated us that society have many stupid and enemies peoples who can convert that in a Ram Rajya. There is so many in whole village. If there's some girl is harassed and nobody can take a voice of that girl to protect our society. So we want, and I want, that our society become powerful like Sri Ram. Ram is the best example of our society. Our every children become a Ram, Lakshmana, Bharata and Satrughna. This is 4 Vedas. So this Ramayana is very important for our society. Now this is a small little try from me to our society. Please share this maximum to the whole world, and this book become a world book, holy world book of the world of universe. Then we start with the name of the God Rama, the glory of Ram Bhagwan. हम भगवान राम की स्तुति करते हैं, उनको याद करते हैं. और if you want your child become like a Ram, the Ram is going out 14 years for his father's one एक वचन के लिए पूरा 14 साल का वनवास ले लिया. That is the Rama. And Sita, that's left all the glory of Rajya and with the Ram Bhagwan in the jungle, in the very difficult situation. That is the Sita Mata. And Lakshmana is the great Sevaka, यानी कि very useful for Rama, Hanuman ji, Sugriv, Gaja, Gavaks, Gandhabadan, all. I will complete this Ramayana in Gujarati, Hindi. All links are given after this episode in description. And this is our 3rd Ramayana. मैं इस रामायण को भारत माता की सेवा में समर्पित करता हूँ. भारत माता के उद्धार के लिए राम भगवान के चरणों में ये रामायण का मैं पाठ भारत माता के लिए समर्पित करता हूँ. हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, हमारे अमित शाह जी, सबके लिए ये रामायण कर रहा हूँ. सो सपोर्ट, थैंक्स. तो शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड. श्रीमद वाल्मीकि रामायण in English, Hindi and Gujarati. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Book 1, Srimad Välmiki-Rāmāyaṇa, Sri Ramchandrabhyam Namah. Balakanda, Pratham Sargah, Canto 1. That is called Canto 1. The celestial saga Närada. Nārada Muni, you know that Nārada. नारायण नारायण नारायण, विष्णु भगवान का हमेशा नाम लेते हैं. दैट इज नारादा. टू वाल्मीकि द स्टोरी ऑफ श्री रामा इन द नटशेल. नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री रामचरित सुनाना. सो इन द फर्स्ट Canto, there is whole Ramayana in a short form. That is the first. And at the last end, in a Yuddha Kanda, this is all Ramayana in the Yuddha Kanda. After that is no real Ramayana.
ओके। सो युद्ध कांड में लिखा है कि रामायण करने से आप समृद्धशाली होते हैं, बच्चे नहीं होते तो बच्चे होते हैं, आप बहुत विघ्नों से पार हो जाते हैं। सो ऑल द our difficulties are vanish when you hear or read this Ramayana. You get very very rich life in your whole life. Okay, so start first Canto1, the celestial saga Närada, narrated to Valmiki, the story of Sri Rama in a nutshell. हम रामायण का पाठ शुरू करने से पहले इस रामायण को खोल देते हैं, भगवान राम का नाम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम टू ऑल। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट श्लोका। फर्स्ट श्लोक, the ascetic Valmiki put the following question direct to the Närada, the chief of the hermits, the foremost of those skilled in expression, who remains ever engaged in asceticism and self-study, the study of the Vedas. तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, Who can possibly be full of the virtue in this world as present? Nay, who is possessed the powers, prowess, and knows that what is right? Who is conscious of service done, truthful of speech and firm of resolve? मुनि, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार करने वाले, मानने वाले, सत्य वक्ता यानी ट्रूथफुल ऑफ स्पीच, और दृढ़ प्रतिज्ञ यानी कि फर्म टू रिजॉल्व कौन है? हु इज दैट? Who is the possessed of right conduct and who is the friendly to all living beings? Who is a man of knowledge? Who is powerful and who is the singularly lovable appearance? यानी कि सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों के हित साधक यानी कि फ्रेंडली टू ऑल लिविंग बींग्स, एंड विद्वान यानी हु इज अ नॉलेज, मैन ऑफ नॉलेज, सामर्थ्यशाली यानी द पावरफुल, एंड एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर यानी कि लवेबल अपीयरेंस पुरुष कौन है? हु इज द possess दिस ऑल प्रॉपर्टीज इन दिस वर्ल्ड? श्लोक नंबर 4, who has subdued himself, who has conquered anger, who is possessed of splendor and who is above fault finding, and whom do the very gods dead when his worth has been apparently provoked in the battle. I will explain you this sloka. Who is subdued in his self यानी कि मन पर अधिकार रखने वाले, जो एंगेज द माइंड। Who has conquered anger, जो क्रोध को जीतने वाला है, जो एंग्रीनेस है हमारे अंदर, ये माइंड में जो क्रोध होता है उससे हमारे ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड इफेक्ट ऑन द टिश्यूज एंड द सेल, सो इट द रीजन फॉर द कैंसर। सो क्रोध को कंट्रोल करने वाला कौन है? हु इज कंट्रोल द एंगर? Who possess of the splendor and who has above the fault finding? इसका मतलब है कांतिमान और किसकी भी निंदा नहीं करने वाले। ये बहुत बड़ी बात है, जो जगत में किसी की निंदा नहीं करते। निंदा यानी जो हम किसी के लिए नेगेटिव बोलते हैं, जो नेगेटिव, राम नेवर मेक एनी नेगेटिव थॉट्स। एंड
तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं. सो गॉड ड्रेड when he is won being the provoke in battle. देवता भी उनसे डरते हैं. I wish to hear this, for there is a great curiosity in my mind about it. While you are capable of knowing such a man, O eminent seer. हे महर्षि, ये मैं सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं. Hearing this appeal of Valmiki, the sage Närada, who possessed the knowledge of the three worlds, तीनों लोक का जिसके पास ज्ञान है, ऐसे नारद जी ने सोच विचार करके listen, greatly delighted, addressing the following words. महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोगों को ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए, लिशन. फिर प्रसन्नतापूर्वक बोले फॉलोइंग वर्ड्स. I shall duly consider and tell you of such hero. Be pleased to hear from me of the man endowed with the manifold and rare virtue that have been described by you. यानी कि हे मुनि, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुनिए. मैंने थिंकिंग कर लिया. आई थिंक एंड आई विल टेल यू अबाउट दिस हीरो. देयर इज अ वन डिस्क्राइब इन द लाइन ऑफ द Ikshvaku and know by the name of Rama. He has fully controlled his mind, is a very powerful, radiant and resolved, and has brought his sense under control. यानी कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं. वे ही मन को वश में रखने वाले हैं, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं. जितेंद्रिय यानी सेंस अंडर कंट्रोल. जिसकी जो सेंस होती है, हमारी कितनी 5 सेंस और 6 सेंस भी बोलते हैं, ऑल इन कंट्रोल ऑफ भगवान रामा. ओके, सो राम भगवान कंट्रोल ऑल 6 सेंसेस. हिज intelligent, sagacious, eloquent, glorious, and exterminator of of foes. He is distinguished with a broad soldier. जो उनके खबे ना बहुत बड़े हैं. मैंने पूरी रामायण पढ़ी, उसमें वो 7 से 8 फीट ऊंचे हैं, 7 to 8 feet height, and the powerful arms, a neck shape a conch, यानी शंख जैसा जो गला है, and साउथ चीन. यानी नारद जी आप सुनिए, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं. वे ही मन को वश में रखने वाले हैं, कंट्रोल हिज माइंड, महाबलवान है, इज पावरफुल एंड कांतिमान है, धैर्यवान है और जितेंद्रिय है. और वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ वक्ता, शोभायमान, शत्रु संहारक है. ऊंचे कंधे, मोटी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, ग्रीवा शंख के समान है और ठोडी मासल और पुष्ट हैं. ऐसे भगवान श्री राम है. ही इज मार्क्ड विथ अ ब्रॉड चेस्ट, जो उनकी छाती है बहुत चौड़ी है. ए माइटी बो एंड अ कॉलर बोन कवर्ड विथ हिज फ्लैश, एंड इज कैपेबल ऑफ subduing his foe. His unusually long arms extend right up to his knee. He has a well-formed head, a shapely forehead and charming gait. यानी कि
वे बुद्धिमान हैं, नीतिज्ञ हैं, उनकी छाती चौड़ी है, धनुष्य बड़ा है। देखिए उनके हाथ में जो धनुष है, बहुत बड़ा धनुष है, दैट इज कॉल्ड बो। और गले के नीचे की हड्डी हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। उनके जो हाथ है वो यहाँ पैर तक, जो लंबे जो घुटन है हमारी, जो वहाँ नी पेन होता है ना, वो नी तक के लंबे हाथ हैं। हैंड इज ए लॉन्ग एज नी टच द नी। एंड भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, ग्रीवा शंख के समान है, ठुड्डी मासल हैं। भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, मस्तक सुंदर हैं, ललाट भव्य है और चाल मनोहर है। नाउ द श्लोक नंबर 11। He is a medium stature, neither very tall nor very short, has well proportionated limbs। proportion जो उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं, राम भगवान कैसे हैं, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। He is shining complexion, is mighty, has a rounded chest, large eyes, is full of splendor and has a auspicious mark on his body। यानी कि उनकी शरीर पर अधिक ऊंचा नहीं है, अधिक नाटे नहीं है, मध्यम है, सुडोल है, देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं, उनका वक्षस्थल भरा हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। यानी कि उनके शरीर में ऐसे ऐसे चिन्ह हैं, साइंस है, signatures of the god, that is like a Vishnu Bhagwan, Shankha, Chakra, Gada. These are all signs on their body, on their hand, on their legs. So he's a seventh avatar of Vishnu Bhagwan and the great avatar, great god, जो तीनों लोक के सबसे बड़े गॉड उनको बोलते हैं, दैट इज भगवान श्री राम। नाउ द श्लोक नंबर 12। ही नोज द सीक्रेट ऑफ वर्च्यू एंड इज अ ट्रूथ टू द प्रॉमिस एंड इंटेंट ऑन द गुड ऑफ द पीपल। ही इज illustrious and full of wisdom, pure in his dealings, a man of self control and concentrated mind। देखिए बहुत बड़ी बात है। देखिए धर्म के ज्ञाता हैं, यानी कि नो द सीक्रेट ऑफ वर्च्यू, सत्य प्रतिज्ञ है, यानी कि नेवर वेरी एंड इज ए ट्रू टू हिज प्रॉमिस। उन्होंने अपने पिताजी की प्रॉमिस के लिए, द फॉर हिज फादर्स प्रॉमिस, ही रीच टू द 14 years इन द वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। प्रजा के हित के साधन में लगे रहने वाले हैं, जैसे हमारे मोदी जी है। सो ही इज ए गुड ऑफ द पीपल। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, यशस्वी यानी प्योर इन हिज डीलिंग्स, अ मैन ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, यानी कि पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। जब वो रावण से युद्ध करते हैं ना, इन द लास्ट एपिसोड ऑफ युद्ध कांड, that the concentration take place of Ram Bhagwan and he fight with the Ravana, the big giant of the world. But the concentration is the secret of all success. For all children, all youths, all businessmen, all successful people, behind that is the concentration. Swami Vivekananda also tell, what is the difference between the successful and unsuccessful? That is the power of concentration. Who has a higher concentration, that is successful in all fields, and that is a low concentration, that is unsuccessful people. So एकाग्रता सब ज्ञान की जननी है। That is the power of concentration. So Ram Bhagwan is the power of concentration. That is a big thing for Ram Bhagwan. Now the next sloka of 13.
He is a supporter of the creation like a Brahma, the Lord of a created beings, affluent and the slayer of his enemies, a protector of living beings and a staunch defender of the faith. यानी कि प्रजापति के समान पालक यानी ब्रह्मा जी जैसे हैं, श्री संपन्न हैं यानी कि he is a own virtue and the protector of his own people, वेरी विध्वंसक हैं और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं. He is the protector of living beings and staunch defender of the faith. He is a vindicator of his own virtue and the protector of his own people. He knows the truth of the Vedas and the six senses, grammar, etc., and auxiliary to them, and is a past master in archery. यानी कि जो स्वधर्म और स्वजनों के पालक है, वेद वेदांग के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं. आर्चरी यानी धनुर्वेद में वो क्या है? द मास्टर, सबसे बड़े मास्टर है. He knows the real meaning of all the scriptures, is possessed of a sharp memory and a quick wit. He is a popular in all worlds, in a pious, high-minded and shrewd. यानी कि वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं. जितने भी नॉलेजेबल द फिलोसॉफिकल बुक्स हैं उन्होंने पढ़ ली हैं. He is read all the holy books of Veda, 4 Vedas, Manusmriti, all Smritis. He is a reader and the knowledge of this all books. स्मरण शक्ति से युक्त हैं. देखिए, जिनकी मेमोरी पावरफुल नहीं है वो कैसे गॉड हो सकते हैं? द पावरफुल मेमोरी एंड और प्रतिभा संपन्न हैं, यानी कि डायनामिक नेचर, अच्छे विचार, द गुड थॉट्स, उदार हृदय वाले, यानी फ्री माइंडेड, फ्री हार्टेड, द डिवाइन हार्ट. और श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर हैं, यानी इज वेरी वेरी पावरफुल फॉर कम्युनिकेशन, तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं. इज अ वेरी पॉपुलर इन दिस वर्ल्ड. Now the sloka number 16. He is always sought by the righteous, even as the ocean by his rivers. He is a noble, nay, alike to all, and always wear a pleasing countenance. यानी कि जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं. एंड वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं. उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है. He is endowed with all excellence and enhance the delight of his mother Kausalya. He views with the ocean in profundity and compares with the Himalaya in point of firmness. यानी संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं. गंभीरता में समुद्र जैसे हैं एंड धैर्य में हिमालय के समान हैं. यानी कि जिसके पास धैर्य नहीं है, यानी कि कॉन्टेनेंसिस, जिसके पास कॉन्टेनेंस नहीं है, धीरज नहीं है, उतावली 7 फेरे फिरती हैं. राम भगवान बहुत धीरज वाले हैं. सो इज गॉड ऑफ ऑल वर्ल्ड. He is endowed with the excellence and enhance the delight of his mother Kausalya. यानी अपनी माता का कौशल्य का आनंद बढ़ाने वाले हैं. डिलाइटनेस, आनंद देने वाले हैं.
डिलाइट, कितना बहुत बढ़िया वर्ड है। अगर आप किसी के दर्शन करते हैं और आपको डिलाइटनेस फील होती है, दैट इज़ गॉड रामा। जैसे आप राम भगवान के मुख को देखेंगे, आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। उसका नाम राम, रमण करने वाले, हमारे रोम रोम में बसने वाले हैं राम, जिनको देखने से हमें आनंद मिले, हमारा रोम रोम रोमांचित हो उठे, दैट इज़ द राम। He is endowed with excellence. He is a replica of Lord Vishnu in the prowess, and he is a pleasing of aspect as a moon in a show of anger. He is a resembles the destructive fire at the end of the creation, and is a counterpart of the mother earth in the forbearance। यानी कि वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं, उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान हैं और क्षमा में पृथ्वी के समान हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। देखिए बड़े 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 जो है ना धर्मराज, जो धर्मराज की बात कहाँ आती है? महाभारत में। महाभारत कब हुआ? रामायण के बाद हुआ। रामायण आज से 7134 साल पहले लिखी गई है। दिस रामायण इज रिटर्न past 7134 years before of the NASA software, which is fill up this data of the birth of Rama. The date of the Ramayana is 7134 years before today. आज से पहले 7000 साल 134 वर्ष पहले ये रामायण हुआ है। That is a proof. NASA proved that the bridge, the Adam bridge that is called Rama Setu, that is proof of this big, and Sri Lanka and the Lanka is the proof of the Ram and Ravana. So it is not a story, it is a history. That history make us powerful in this world. So history is the history, not a story. This is the real fact that is done in the past. So he equaled the Kubera, the god of the riches, of the best over the wealth in liberty, and is another dharma, the god of pity, as were in the point of truthfulness. With intent to the greatly the people, the king empowered the Dasratha, lovingly shouted to the invest with the offense of the regent his beloved son श्री रामा। यानी कि इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजावर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषेक करना चाहा। Who possessed the unfalling powers, prowess, and was adorned with the aforesaid qualities, who was not only the eldest of his four sons in the point of age, but was also endowed with the highest virtue and the devoted to the interest of the people. सबसे ज़्यादा प्रिय थे, सबसे काबिल थे, सबसे बड़े तो थे, काबिल भी थे। Witnessing the preparations in the connection with the installation of Sri Rama, the illustrious Queen Kaikeyi, the youngest of the three principal consort of Emperor दशरथा, दशरथ की जो 3 रानियाँ थी, उसमें सबसे कम उम्र की जो है उसका नाम है कैकेयी, who had been granted a boon of emperor on a former occasion in recognition of the
her outstanding personal courage and service to her husband on the field of battle. तो उसने अपने वचन से उनको बांध लिया और उनका राज जो राम को मिलना था वो भरत को दिलाने के लिए वचनबद्ध कर दिया. And asked of him in lieu of the promised boon that exiled Sri Rama and the installation of the Bharata, her own son. देखिए कैकेयी ने क्या किया. इस प्रकार तदंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारी देखकर रानी कैकेयी, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, जो लड़ाई हुई थी उसमें उसको वर मिला था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन यानी कि वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक हो. सो कैकेयी द यंगेस्ट वन क्वीन ऑफ द दशरथा, उनको वचन में बांध लिया, बाउंड कर दिया. Who had been granted a boon of emperor on a former occasion, bounded as he was by the tie of the duty in the form of his pledged word. Due to his ever speaking the truth, King Dasharatha exiled his beloved son Rama. यानी कि क्या हुआ. देखिए राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया. In obedience to his father's command in the form of the boon granted by him, favor of Kaikeyi, and with a view of placing Kaikeyi, his stepmother, the heroic Rama retired to the woods in the order to implement of the pledge of his father. देखिए ऐसा son कहाँ मिलेगा. How you find that type of son in your life, that वो woods यानी जंगल में चले गए, order to implement the pledge of his father, जो अपने पिता के वचन के लिए जंगल में जाने को तैयार हो गए. दैट इज द सन. ऐसा सन कहाँ से मिलेगा आपको. ठीक है. तो कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले गए. यानी उनके एक वचन के पालन के लिए वो अपने वचन से गलत साबित ना हो इसके लिए वो वनवास के लिए चले गए. इन द ऑबिडेंस ऑफ हिज फादर्स कमांड इन द फॉर्म ऑफ बून, to implement his pledge of his father. His loving younger brother Lakshmana, who enhanced the delight of his own mother Sumitra. देखिए लक्ष्मण के पुत्र का नाम है सुमित्रा. The younger of the two other principal consort of Emperor Dasharatha, and who was not only adorned with the modesty but a favorite of his brother Sri Rama, followed his aforesaid brother out of affection as the latter set out on his journey to the forest. देखिए ऐसा भाई कहाँ मिलेगा. तब सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया. Thus testifying to his amicable relationship, Sri Rama wedded spouse Sita, so called because she was the unearthed from the track of the log share, यानी जो खेती करते हैं उनसे निकली हुई है सीता. Who was the dear to him as a life, वो उनको बहुत प्रिय थी अपनी पत्नी सीता. Was ever friendly to him,
who thought not born in the ordinary way from the mother's womb, was taken as a descendant in the line of Janaka, a king of Mithila, Sri Adwaja by the name Janaka being his family title. यानी कि जनक के कुल में उत्पन्न हुई सीता भी जो अवतरणित हुई थी देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे पीछे चली। जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती हैं, उसी समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों के स्वयं साथ जाकर दूर तक का अनुसरण किया। Was endowed with the all auspicious mark on her person and was a veritable jewels among women, and who looked like a Lord's own wonderful potency manifested by the Lord himself, and also accompanied Sri Rama as a Rohini, the spouse of the moon god, also constellation of the name, that name followed the moon god. Nay, he was followed after by the citizens of the Ayodhya as well as by the aged father Dasratha. So this katha is started in a short way, जो एकदम नारद जी ने पूरी की पूरी कथा जो है होल रामायणा is taught in a short way. Now till this first episode of this katha, thanks for watching. Next time we will meet for our next sloka. Thanks for watching. Jai Sri Ram. Om Namo Ramchandraya Namaha. Sri Sitaram Chandrabhyam Namaha. Rama Ramaya Namaha. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Siya Ram, Jaya Ram. Siya Ram, Jaya Siya Ram. Siya Ram, Jaya Ram. Siya Ram, Jaya Siya Ram. Siya Ram, Jaya Ram. Siya Ram, Jaya Siya Ram. Siya Ram, Jaya Ram. Siya Ram, Jaya Siya Ram. Jai Sri Ram. Jai Sri Ram. Jai Sri Ram. Thanks for watching. Like, share and subscribe. भगवान श्री राम की जय हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो. Thanks for watching. जय महाराज, जय श्री राम.